I typed my roll number with Control plus F, and Mhm. sir, I found my roll number and my name there. I immediately went to my parents' room and I told them that I've made it. I divide my prelim strategy into four pillars. The first is PYQs. एक बार रिसोर्सेज आप बता सकते हो क्या क्या यूज किया आपने? आपने कैसे डिसाइड किया कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ना चाहिए और मेंस के लिए नोट्स बनाना चाहिए और ये मुझे छोड़ देना चाहिए? आपकी प्रीलिम्स को लेके मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी? How you consolidated the information of the mocks you given before giving to the main examination, like prelims examination? सर मेरा सवाल सीसैट को लेके है। मैं लास्ट ईयर भी सीसैट फेल कर गई हूँ, तो सर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज क्या होने चाहिए, टॉपिक्स वगैरह, सर उसके लिए कुछ बता दीजिए। How important the role of guidance and mentorship in this preparation? In that field, you are doing a great work through your mentorship and guidance courses. Sir, the work you are doing on YouTube, free for students, Mhm. getting them a lot of insights about this exam. So through your own experience, you are teaching them. Not everybody is doing that. So, sir, kudos Mhm. to you for that. And so definitely, it's very important to look for a right mentor. And Exactly. once you get them, stick to their advices and follow them by their heart. If you are preparing for prelims 2026, then literally we have very very less time. और इस लेस टाइम में हमें रिवीजन करनी पड़ेगी। और अगर आपको भी लक को अपने फेवर में करना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। देखो यार, इस लास्ट मोमेंट में ना बहुत सारा प्रेशर बिल्ड होता है, बहुत एंग्जाइटी आती है, कभी कभी सेल्फ डाउट होता है। सो यू नीड सम गाइडेंस, यू नीड अ मेंटोर सपोर्ट। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये रैंकर्स बैच लॉन्च किया है, जो कि प्रीलिम्स रिवीजन बैच है। ये लास्ट इनिशिएटिव है प्रीलिम्स 2026 के लिए। यानी कि अभी हमारे पास लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। फॉर द नेक्स्ट 40 डेज दो चीज़ें होंगी इस बैच में। नंबर वन, PYQ बेस्ड सेशंस, विच मीन्स 15-20 साल के PYQ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उठा के आपके साथ लाइव डिस्कस किया जाएगा। दूसरा, आई विल कवर लाइव 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि सारे सब्जेक्ट से हैं। उसकी PDF वगैरह आपको मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट वी हैव सम सेक्शनल टेस्ट, देन फुल लेंथ टेस्ट, देन CSAT, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये बैच में सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली 100 सीट्स फॉर सीरियस स्टूडेंट्स, ताकि हम उनके साथ क्लोजली काम करेंगे और रिजल्ट पर फोकस करेंगे। आपके स्क्रीन पे ये इमेज है जहां पे रैंकर्स और रैंकर्स प्लस बैच में डिफरेंशिएशन है। आप दोनों को पॉज करके डिटेल में पढ़ लीजिए। रैंकर्स प्लस में मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है। जो कोड दिया है वो कोड आप जाके हमारे मोबाइल ऐप में या फिर वेबसाइट पर जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे वहां यूज कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। शुड यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी चैलेंजेस, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। Hello and welcome to Margdarshan IS. Today we have got Arpit Rituraj, who has cleared UPSC in the very first attempt and secured All India rank 875. So, Arpit, congratulations, yaar. This is एक तो PDF में नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एंड पहले प्रयास में यू हैव क्रैक्ड UPSC। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्गदर्शन IS में आपका स्वागत है। और हाउ आर यू फीलिंग, अर्पित, राइट नाउ? Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for having me. Sir, it's definitely a surreal feeling. And I think it's been a few days now, but I'm still trying to process what has happened. And sir, it has been a big moment, not just for me, but for my family, for my relatives, for my friends. And sir, the entire flow of greetings, sir, it's continuously coming still. And sir, I'm still trying to process all this. I'm very grateful. I'm very fortunate to have this privilege of a lifetime. हम बहुत सारी आपसे बातें करेंगे। और आप लखनऊ से हैं, राइट? यू आर फ्रॉम लखनऊ? Yes, sir, I'm from Lucknow. ओके, मुझे एक बैकग्राउंड बता सकते हैं आप कि आप कहाँ से हैं, आपका ग्रेजुएशन क्या था, सो दैट एस्पिरेंट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू फ्रॉम द रूट्स। Yes, sir. So, sir, when somebody asks me where are you from, actually, I tell them that that's a very deep question, and there is no straight answer to that because my father is in a transferable job, and ओके, almost every year we've been transferred. So ओके, throughout my schooling, I've changed approximately 10 to 12 schools ओके, in Uttar Pradesh. And ओके, sir,
after that, after my schooling, I went to Delhi to pursue my graduation in political science from Hindu College, University of Delhi. Okay. Okay. Sir, I graduated in 2024, and Okay. so immediately I joined my master's degree from Delhi University itself. And so, Okay. along with that, my master's, I appeared for UPSC in 2025. And so, fortunately, Okay. we've been successful in this very attempt. And so, my master's is still ongoing. I'm yet to complete it. All right. Um, glad to hear that. Masters अभी चल रहा है, and then you have done, of course, your graduation. Father क्या job है? So, he's an IPS officer. IPS, like, is it direct UPSC वाला IPS? So, through state, he was Okay. recruited as a DSP through UP Okay. PCS. Later, he got inducted into IPS eventually. अच्छा, क्या नाम है? Sir, Basant Lal, currently he's posted in the Anti-Corruption Bureau of UP Police. लखनऊ, right? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हेड ऑफिस तो उसका वहीं पे है, Yes, sir. right? The headquarter. हाँ, हेडक्वार्टर वहीं पे है. Okay, awesome. Why I'm asking, because my father-in-law, he was also retired as an IPS. He was into jail department. So Right, sir. I'm sure थोड़ा बहुत जानते होंगे, for sure. No, so definitely we must be knowing each other. उनका नाम है श्री राजेश कुमार राय, and he was retired as a jail superintendent from संत कबीर नगर, वो जो गोरखपुर वाला है. Right, sir. Right. Awesome, fantastic. Glad to hear that. Mother क्या करती हैं? So she's a homemaker. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई वो. Yes, sir. I think her role has been so more difficult and more pivotal. So for upbringing of me and my elder brother, so many times my father was posted in a distant location where quality education facilities were not available. So we had to live separately from him for some time, Right, so of that course. yes, I could get quality education, and sir, I can become the person that I am today. Of course, I totally agree with you. क्योंकि जॉब ऐसी थी, और फिर जरूरी नहीं ना कि जहां पर जॉब है वहां पे स्कूलिंग बहुत अच्छी हो, या फिर वहां पे आई कैन टोटली रिलेट व्हाट यू ट्राइंग टू से, बिकॉज हम लोग के भी, माय फादर इज आल्सो इन पंचायती राज, ही इज इन विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर. तो मतलब जरूरी नहीं कि कि अच्छी शिक्षा वहां पर हो, और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा अच्छी जगह पे पढ़े. सो Yes. वेरी वेल डन. एंड मम्मा का क्या रिएक्शन रहा? Sir, so since 2nd of March, rumors were circulating that result could be out anytime, any day. Sir, I was very anxious. Constantly, I was checking the website, refreshing it every 10 seconds. And sir, on the fateful afternoon of 6th of March, the result was there. I typed my roll number, with Control plus F. And sir, I found my roll number and my name there. Sir, I was very overwhelmed. I did not know how to react. I immediately went to my parents' room and I told them that I've made it. And they also like bursted into happiness. There was joy all around. And so since then, the environment has been very pleasant. People have been coming over, been greeting and talking about everything. Right. So I think this is the best feeling a person can have in their life, and I wish everybody get to experience something like this. Right. I think by 850, 875, I think आपको IPS मिल जाना चाहिए. Sir, I'm expecting IRS. It's in my preference order, higher. अच्छा, मतलब आपने IRS को, okay, is your second preference IRS? Yes, sir. And sir, also I'm not medically eligible for IPS because of Okay. low eyesight. Okay. Yes, sir. Okay. All right. Eyesight तो ठीक हो जाती है. Sir, there was some injury that I अच्छा. had when I was very little. Sir, it's something that cannot be corrected through a lens. Sometimes it's a permanent scar. Yeah, why I'm telling you this, because my brother, वो कनाडा में रहते हैं, and एक मतलब रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज यहाँ से जॉब वहां पर ट्रांसफर करवा लिए उन्होंने, यहाँ से इंडिया से वहां पे, तो आई साइट की एक उसमें रिक्वायरमेंट थी. तो माय ब्रदर हैड टू, मतलब उसने कराया, उसने लेसिक लेजर कराया, उसकी माइनस में थी,
और लिटरली मतलब पॉजिटिव में आ गया। और बट बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इस पे पेन होता है। But all right. So, I mean, IRS, the revenue services, and I wishing you like all the very, very best. India needs a dedicated revenue services officer, where a lot of people are resigning, and now you intended to work. So that's the backbone of our revenue system. And first of all, I would like to thank you first that you are somebody that you are wanting that position. So very well done, yaar. Proud of you, really So proud thank of you, you. sir. Thank you. ये ज्वाइन करना है, आर यू थिंकिंग ऑल्सो टू गिव अनदर अटेम्प्ट फॉर द रैंक इम्प्रूवमेंट? Uh, Sir, since age and attempts are on my side, but sir, that's immaterial now because of the policy change. Regardless of that, I am planning to appear again. So administrative service remains to be my first preference. आई थिंक आई थिंक यू शुड, और आई थिंक यू शुड, यू आर like a sharp candidate, and I think you understand things very well. You deserve to be there. Um, but nonetheless, you are in the list. You will be getting your preferences जो कि आपको मिल रही है, and I think you are already thankful to the God and to the parents as well. Yes, sir. Uh, And so, regardless of that, I feel like right, no service is subordinate to one another. exactly, Sir, exactly. it's a privilege to be in any of the service and be of some use to the people of our country to Right, contribute in some way or the other. right, right. Fair enough. So ये सब तो हो गया। अब हम लोग एकदम रियल लाइफ स्ट्रगल पर आते हैं विथ रेफरेंस टू प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। So before we proceed, I would just open this platform for students. They are just coming in. They are waiting. मैंने उनको रोक रखा है. Okay. So just give me one quick moment. I will admit all right now. Okay. Yes, sir. Hello, everybody. Um, as promised, we have Arpit with me. हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे लगभग 5 मिनट से पहले। सो नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं पूछ लूंगा अर्पित से। इट्स जस्ट कि बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, अगर अगर आप पूछेंगे तो बहुत केओस हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग लास्ट में एक 1-to-1 भी कर लेंगे अर्पित के साथ। सो ही सो हम्बल, ही सो काइंड। उन्होंने कहा हुआ है कि नहीं, आई विल ट्राई टू एड्रेस क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी कैंडिडेट। सो अभी आई विल जस्ट डू माई वर्क, और कैसे एक मेंटोर एक रैंकर से इंफॉर्मेशन निकालता है वो मैं इंफॉर्मेशन सारी निकालूंगा अभी। और जितने भी आप लोग सुनते जाइए, कुछ भी दिमाग में आता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ओके, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, और मेक श्योर कि आप पीसफुल एनवायरनमेंट में रहें, सो दैट हमारा ये टॉक, हमारी कॉन्वर्सेशन हिंडर ना करे। सो वंस अगेन अर्पित, सिंस ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर, इनके बिहाफ पे भी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वंस अगेन मेनी कंग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. Thank you. Now, the one thing I wanted to ask, कि वैसे भी ये एग्जाम की सक्सेस रेट 0.1% है फ्रॉम द ओवरऑल थिंग, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, विच मेक्स द परसेंटेज इवन वेरी लेस। लाइक 1,000 कैंडिडेट गेट सेलेक्टेड, उसमें से कुछ चुनिंदे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं। नाउ हाउ इज द फीलिंग अर्पित, लाइक पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना? So first of all, I feel like it is a big achievement if we think about it. But the way this exam has been designed, I feel like it's a level playing field for all candidates, irrespective of how many attempts they have given before, or people who are young, they are at no such disadvantage. It's just that if people follow right strategy, limit their resources, and plan smartly, then clearing this exam in first attempt is something which is very much doable. And many people have done it before. Yeah, Not just yeah. me, but many people, like we have uncountable examples in front of us. So it's just about having faith in yourself, believing in yourself, believing in your capabilities, and be strongly driven why you want to do this. You want to have an extremely clear state of mind. Why are you entering this arena, and why you see civil services as a career which is
worth your temperament, because there's no guarantee that you will clear in your first attempt, even Exactly. if you work hard. Exactly. But again, 100%. you have to sign up for that uncertainty while you're entering. Hmm. And sir, I feel like it's more important to have that faith with you. So just a second. Hmm. Good evening, sir. Yes, sir. So I was Yeah. saying, having that faith intact in your mind, that irrespective of how many people there are against you in the competition, you just want one seat. And Hmm. that's what you're here for. You have to Hmm. fight for that. You have to identify your strengths, your weaknesses. What are the areas where you can outperform other people? What can be those subjects? If you're having a particular background in any subject, you can take that as your optional Right. and make it. आपका If क्या you're, ऑप्शन था अर्पित? so it has been PSIR. And that was from your like graduation, right? Yes, sir. I studied that in my school, 11th, 12th. And, sir, graduation in the same subject and also post graduation. Right. Sir, Post, right. Post graduation. sir, I've been a political science person all my life. Okay. Great, awesome. Now, let us break this journey into 3 parts. As I said, pre, मेंस और हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे. So, now pre is one of the most brutal stage जहाँ पे maximum elimination होता है. अभी ये जो टाइम चल रहा है, आई थिंक लास्ट ईयर आप भी इसी फेज में थे, राइट? यू वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो क्या चलता था दिमाग में इस फेज में, और Yes, कैसे sir. आपने डील किया? हाउ डिड यू डील विथ प्रीलिम्स स्ट्रेस, एंड देन व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी अभी से 60 डेज वाली? Yes, sir. Sir, I divide my prelim strategy into 4 pillars. So there are ओके, 4 fundamental pillars a person has to focus on ठीक while है, they are beginning their preparation for the prelim stage. ओके, The first is PYQs. And ठीक when I है, talk about PYQs, take at least last 30-year PYQs, ठीक because है, from the syllabus side, there is not much help. The राइट, syllabus of prelims is not well defined. It's like very broad. एग्जैक्टली, So the indicators, what are the important themes, what are the important topics that we have to study, what are the subjects we have to emphasize more on. If we talk from a cost benefit point of view, where giving time will lead to greater leverage. So in that area, PYQs help a lot. And sir, the utility of PYQs does not end there. It also helps you to build that temperament, to build that aptitude of solving multiple choice questions. And राइट, if you're solving, PYQs from these years, you also become very familiar with the language of the questions, the way UPSC phrases its questions. And right, if you have become, used to with that language, then this skill only will help you solve at least 10 to 15 questions every year, which is what kind of maybe general statements could be true, or if extreme terminologies are being used, that can be an indicator that the particular statement is incorrect. right, I'm just giving very simple examples. There are various patterns that could be identified by looking at the language of questions. right, Then, sir, I believe NCRTs are non-negotiable. I would exactly, recommend students to go through the class 11th and 12th NCRTs. Many people say that you start from class 6th, but not always that is sustainable. You have a paucity of time. That's not doable for everybody. right, But if a person is able to do at least NCRTs of class 11th and 12th for the core subjects, just geography, history, economics, political science, sir, I think that will be sufficient to gain a basic conceptual clarity. And from there on, you can advance your understanding by moving to advanced text. For certain subjects, we prescribe books like Lakshmikant's Polity, Spectrum of Bipin Chandra Rao, Shekhar Bandyopadhyay for modern India. Either one of the books could be referred. Or sir, similarly, there are other books for respective subjects. Sir, it's a process that cannot be skipped. Building your foundation is a necessity, because then only you can move on to play these concepts and apply them. Because even in prelims, we are seeing that questions are not direct. You have to apply your mind. You have to think right, through
those questions. So Arpit, your resources for prelims is like same what other people has, is like you're following something Yes, sir. different. Same, So एक बार resources आप बता सकते हो क्या क्या यूज किया आपने? yes, sir. So it has been more or less same than what अच्छा. people have already said. हम्म PYQs, so हम्म NCRTs, some हम्म mock test. Mock हम्म, test, I would recommend at least 10 to 15 full-length mock tests a person should practice before they sit for the बिल्कुल exam. बिल्कुल. And sir, also analyze all the Right options. That also becomes an enhancer for people's knowledge. So right. that is another resource. Then, हम्म sir, your standard notes, if you've attended हम्म any coaching class before, or हम्म, by reading books on your own, if you have made notes, so that is right. also very much handy. हम्म And for prelims, many people say that you don't have to make notes. I हम्म, feel like in prelims, it's most important to have your own notes because exactly. coverage of prelims is so broad, you can never really become satisfied by reading the standard books again and again. हम्म So you need to have a consolidated compilation of your own notes where you have felt like certain themes or certain keywords or certain facts and figures are more important than other. हम्म हम्म. Even if that doesn't helps you, at least that will give you the confidence when you are entering the exam hall that you have done enough. And if you have done enough, So you'll notes कैसे बनाते थे आप अर्पित, like last moment में? yes. For example, let's take a case study that हमारी ये mapping हो गया. Like mapping is like it's broad. So how you used to make notes of mapping, geography, IR कैसे होता था? So, sir, I relied on digital means. I felt like pen and paper are more inconvenient for me. It is difficult to ठीक organize or amend them or update them as ठीक है. information is coming in. Sir, I Okay. used OneNote very extensively. OneNote. For Okay. every subject, I made sir, one window, and Okay. sir, there all the information I felt like is important from prelims perspective. Hmm. So whatever material I was reading, so newspaper, so my own consolidated notes, so standard books, or sir, in general, I was having any discussion with my friends. If I felt like some new information is coming in, I Hmm. just took a note of it there, so that ठीक. whenever I'll sit down to revise, I'll just Hmm. have a look at everything that I've written there. At least that Hmm. will give me a sense of satisfaction. So for all the subjects, geography, history, political science, IR, art and culture, physical geography, mapping, so I made a digital notes that I was revising. While I was sitting on my table, I was accessing them through my laptop. Even when I felt like I don't want to study, I Hmm. opened my phone and I was accessing the same notes, not scrolling Instagram or anything else. So Okay. in that Okay. way, I was able to reinforce the same content again and again. And Hmm. sir, Hmm. felt like that my own resource helped me more than anything else because that gave Hmm. me the confidence, that gave me a sense of conviction that Hmm. what hard work I have put in, 99% of the people haven't done that. And So, Arpit, your notes was based on the like was it a blend of PYQ, current affairs, and your yes, class notes? sir, those notes were very raw in form. Uh, Hmm. they were not like quite neatly organized that this was PYQ section or class notes or so one topic is ending there and another is beginning. It Hmm. was just you can say a collection of different facts and figures. And sir, Hmm. why it was in that form? Because I felt like half of the information is in my brain and Hmm. only half of the percentage of it I'm putting it down on the notes so that Hmm. when I will have a look on those notes again, my mind will trigger the entire Hmm. concept and immediately within fraction of seconds I will be able to revise them and recall the information that I need there. I did this because I wanted my notes to be very personalized. My ठीक notes है. could not be of much help to other people because there are linkages that are so most of them Hmm. are with me. Hmm. Only so a fraction of them are actually there in the notes. This is what I'm recommending to aspirants to do on their own behalf. Make such notes where you can revise quickly because in Right. prelims, it's not about uh, how much you have read, or Hmm. basically how much information or knowledge you have. It's about Hmm. confidence. And that confidence could be gained only through doing practices like these. Right. Right. 100%. अर्पित, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे इस बार प्री में, एंड व्हाट डू यू थिंक लाइक अटेम्प्ट शुड बी
Like, should we see as कितने सारे हम questions attempt करें, or we focus on the accuracy part? मतलब, how did you do that? Sir, I attempted 82 questions, and Okay. around 62 to 63 I got right. I Wow. have a Nice. net score of around 102, Wow. sufficient for me to clear the cutoff. Hmm. So for me, the ideal number of attempts would be 80 to 90 questions. This ठीक many है. questions I have to attempt Hmm. if I have to be sure that I had a good attempt. For Hmm. different people, it could be, sir, a different number. For Hmm. example, Hmm. my friend Vikas, Hmm. he secured AIR 159. So, sir, Hmm. he only attempted around 72 to 73 questions, but Hmm. his accuracy was so sharp, he scored Hmm. more than 120 marks Is it? ultimately. Oh, Yes, sir. nice. It's not always about attempting more questions, or there is a Exactly. universal. Yes, sir. The number could vary for different people, Hmm. but focus should be on accuracy. You should not simply attempt questions for the sake of it. Yeah. Even if you have corrected enough questions, if you also mark like more questions wrong, uh, negative marking could be there, and you could be out of the race. So, Right. be confident. And 80 questions, I think a person should attempt. Otherwise, Hmm. different people have different aptitudes. They can Right. decide for. So, Arpit, did you also manage to somehow work on your strength and weaknesses with reference to prelims subject? आपने कुछ आपकी स्ट्रेंथ भी थी कि ये पॉलिटी मेरा स्ट्रांग है, इकोनॉमी मेरा Yes, स्ट्रांग है, या और कुछ सब्जेक्ट्स आपने लाइक छोड़े भी थे जो कि एकदम कुछ कुछ बताइए उस yes, पर्सपेक्टिव sir. में. So definitely, as you rightly said, polity was a subject where I was confident that अच्छा. I will mark maximum questions right here. हम्म. So economics, I was also fairly confident in. ठीक Uh, है. I thoroughly read the NCRTs and the current affairs also. I ठीक है. thoroughly read the economic survey and budget for that year, for last year. हम्म. Uh, if any subject where I felt like my preparation is deficit, so was in history. I अच्छा. have read history a lot of times. I have revised that also. But हम्म. sir, in the last months of prelims exam last year, I was not हम्म. able to give enough time to like histories, all the parts of history, medieval, ancient, modern. ओके. But sir, luckily, what happened in the 2025 paper, the history section was easiest, and हम्म. based on the preparation for history, I was able to mark a lot of questions right there. हम्म. हम्म. I think where people lack, and where if people can focus more on subjects like mapping, IR, science and tech environment, people are quite scared that these are the questions that are too difficult to attempt. हम्म. If हम्म. you even mark half of the answers right there, you can हम्म. still get leverage and easily clear the cutoff. So, हम्म. science and tech and environment, I especially prepared for these subjects. हम्म. Not much could, but I'll share what I did. I हम्म. thoroughly read the current affairs compilation, since questions from these subjects are more current oriented. Sir, I read the Shankar IS book for environment, ठीक and है. sir for science and tech. And sir, ठीक है. also I reading the PIB publication, so on ठीक है. major achievements that we were having last year. हम्म. I was sure that some or the other way question could be from there. हम्म. राइट. Doing these courses for these miscellaneous subjects, I was sure that if I'm not able to get a question right, most of the people will not, and difficult questions will not decide the cutoff. It's always the questions from the static portion. हम्म. Sir, apart from the static portion, I also got a few of the miscellaneous questions right. So that helped me to get through the cutoff. ओके. विच मीन्स देयर वाज सर्टेनली कोई कोर एरिया था अपना जहां पर आपने स्ट्रेंथ पे यू वर्कड ऑन, एंड देन सो विच मीन्स जो हिस्ट्री पढ़ने का जो टाइम था आपका, विच यू फील लाइक कि आई शुड गिव मोर टाइम rather than reading history, then I should focus on polity, economy or geography, right? That's Yes, how you sir. did, So right? Okay. also because in 2024, very few questions were for modern history. So I Right. felt like that this year also it may Hmm. happen, but something happened as it always happens with UPSC. Right. Expect the Unexpected, of course. How did you manage CSAT since you were from the humanities background? So was CSAT a challenge for you, या फिर
एक केक वॉक था, अपना कर लिया? Sir, initially when I started my preparation, I will definitely concede that CSAT was something where I was very terrified. अच्छा. Quantitative aptitude, and sir, also a few concepts of logical reasoning. Because हम्म. mathematics as a subject was something that I only read in class 10th. After that, I've never picked it up. And sir, the kind of questions that I saw in recent years, CSAT is becoming extremely difficult. Even people a well-established background in such subjects are Right. sir, struggling there. So, sir, what I did, I solved questions of all the past years since CSAT has been introduced. I ठीक made है. sure on every question, and I understood the concept behind it. What is the ठीक है. mechanism? Okay. How one is supposed to approach these questions? Hmm. And what I realized, not always the question is difficult, but the way it has been framed, the way it has been phrased, हाँ. हाँ. only to make people to appear like that is something that cannot. But once I understood the concept, I started applying the tricks, the methods. Was something that I realized it's very much doable. And sir, I was able to score good in CSAT. I scored 105. Very good. Awesome, यार. गजब. Sir, but sir, comprehension was my strength. So most of the Hmm. questions were for comprehension. I cherry picked the easy questions from maths and logical reasoning section. And sir, by solving sir ample number of questions, around 50 questions, I guess I attempted. And sir, that was So, sufficient. Arpit, now I just want a small insider opinion for somebody who is preparing for CSAT. So, मतलब हम उस 80 क्वेश्चंस में से एक्सेप्ट दी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ओके, हम लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स की बात करते हैं, तो क्या हमें वो इजी क्वेश्चंस के पीछे भागना चाहिए कि यार वो सिंपल हैं, इजी हैं, पहले लगा लेते हैं, या फिर हम वो कॉम्प्लेक्स वाला, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो व्हाट वाज योर लॉजिक फॉर क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग? Yes, sir. So, sir, one thing I told myself very clearly, CSAT consists of 80 questions, but I don't have to go through all the 80 questions. There would be some questions, I'll have a simple look and I will realize it is something that could be solved, but it will take time. And CSAT is all about doing this cost benefit analysis. If you're solving a question in, for example, 6 minutes, and if you're able to solve 3 questions in 6 minutes, who are like much easy, the weightage is same for every question. So simply there is no point of wasting time here and there. And CSAT is ultimately a qualifying paper. So you only have to meet the cutoff. So I understood this, and I only focused around, I guess, 50 to 60 questions that I Okay. felt like I gave all my energy there. And sir, once I attempted sufficient number of questions that I was sure of is the right So, answer. so how much portion of math you have done out of all the 55 questions you did? उसमें से मैथ का Yes, sir. कितना था, एलआर का कितना था, और उसका कितना था कॉम्प्रिहेंशन में? So for comprehension, I think I attempted 90% of the question. अच्छा. Also for maths, it must have been around 20 to 30%. And ओके. sir, for logical, sir, around 50 to 60 questions there. Okay, okay. And because that's how we play on strength, right? Yes, sir. Exactly. So, I mean, the bottom line is, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन भी रहे हैं हमें, तो बॉटम लाइन ये है कि एटलीस्ट मेरे हिसाब से इन तीनों में से कोई दो सेक्शन अपना सबसे स्ट्रांग बनाइए. Yes, sir. क्योंकि एक तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इट्स डेंजर रिस्क, बट दो Yes. सेक्शन को स्ट्रांग बनाइए सो दैट we can get through. And I think Yes. Arpit has also followed this stuff. Yes, so those sections को आप focus करिए, and also don't entirely leave one section totally. Of उसमें भी course, आपको 100%. questions doable उसमें भी आपको मिल जाएंगे. 100%, 100%. Awesome. So this was the result. अब मुझे ये बताओ कि आपको अंदर से था कि प्री हो जाएगा मेरा पहला अटेम्प्ट में, क्योंकि यूपीएससी का 99% होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सिलेक्टेड होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं होते हैं. सो आपको अंदर से था कि मेरा फर्स्ट में हो जाएगा. वर यू ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर मेंस? Sir, after the prelims paper in the evening, when I matched with coaching keys, कीज, हाँ. I felt like that comfortably I will clear. अच्छा. It was not something I was tensed about in those 15 days period when prelims the result is yet to come out. Sir, I realized that
time very smartly because I was confident that I'll clear prelims. Okay. And for mains, so before December, so I started my wholehearted prelims preparation in January 2025. Before अच्छा. that, I was mains only. So consolidating my notes, so writing half length and full length test, and developing that temperament, where immediately I was able to generate points, looking at the question, identifying the subheadings, making part, also trying some innovative ways for presentation. Sir, I think before January, I totally focused on mains, made my own notes, value addition, brownie points, as people say. I made a repository, and I was totally relied on my own notes only. During mains, so between the period of prelims and mains, a lot of content also floods in the market. I was not too bothered about thinking that maybe I'm missing out on something by like ठीक not है. referring more sources or diversifying my sources. I kept my sources limited, and I was confident that what I have done over the course of past year would be sufficient for me to get answers. And sir, for mains, sir, I divided my time, this much time for GS, this much for optional. And sir, I made a script. And I also focused on using limited knowledge for multiple uses. How the knowledge of optional could be used in GS papers, how something I learned in GS could be applied in optional in the form of example or, sir, implementing a theory, some theoretical concept, how that manifests in real world. So I focused on Right. these intersections so ठीक है. that you can use that. एक question here I would like to ask you, Arpit, कि since this was also your first mains, and mains is literally, it's long, it's tiring, and it's one Yes, of this, बहुत लिखना पड़ता है उसमें. So एक तो कि were you also prepared that you are ready to write almost 3600 words एक दिन में हमें लिखने हैं, काफी सारे लिखने होते हैं. और मतलब ये प्रिपरेशन कैसे आपने की? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि दीज आर द, ये स्टूडेंट्स हैं, दे आर अपियरिंग प्री एंड देन दे विल अपियर मेंस. सो नाउ इफ यू वांट टू गाइड देम कि मेंस को प्रिपेयर कैसे करें, तो आप इनको क्या गाइड करोगे? लाइक वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, कैसे आप मेंस को आप देख सकते हो प्री के बाद? but I think the mains, sir, it's most intellectually, mentally, physically exhausting process a person राइट. can go through. Literally, you will be in pain. You will not feel like appearing for the paper that is after. Uh, 100 thoughts would be coming in your mind. How the paper went, how the next paper would look like. Maybe you're underprepared, maybe you're not confident enough. But accepting this reality and accepting all the uncertainty that is so that comes with it, one has to prepare themselves for this process. The between prelims and mains is exactly for this. While you're not consolidating your notes, revising, writing mock test, but also doing this mental exercise where you're mentally preparing yourself. Because on the day of the exam, say in the exam hall, the pressure is intense. You are surrounded by so many people who may be so much experienced than you, who may be so much veteran than you, people who are already in writing again, people who have written mains multiple times. But you have to Absolutely. be on your content and your skill of answer writing and making sure that you already simulated this practice before. ठीक Writing है. test, limited time limit, ठीक है. sir, substantiating points with examples. This is ठीक a है. practice that person has to do a lot of times before they actually enter in the mains exam hall. I've heard many people do things like preparing themselves by writing 3 tests in a day, so that writing 2 tests a day doesn't become burdensome exercise for them. So these ठीक are है. the kind of people do. And so on the What day of what the exam, what what was the role of previous year question paper in mains oriented? क्योंकि प्री का आपने बता दिया, मेंस yes, में कितना बड़ा रोल है, और हाउ डिड यू अप्लाई, कैसे किया आपने? yes, sir, again, sir, means the vehicles are non-negotiable. Not only these are practice questions for aspirants to write answers, but also they're a source of knowledge, possible indicators, what are the things that could repeat. And specifically, sir, for optional subjects like humanities optional, like my PSIR and through sociology, if a person is doing last 20 to 25 more vacuums, then they are done. They don't need to do anything else. By doing that, only a person can cover the entire syllabus in question answer format.
So for GS also, person will realize that what are the possible intersections that UPSC can come up with. Those questions are not simple or straightforward. They're very analytical where a person has to think, pause and think. For subjects like society, social justice, simply a direct answer to that. You have to innovate. You have to play with your knowledge. You have to use the knowledge of one GS paper across other GS papers. For example, this time, many questions that were placed in a particular GS paper, they were actually from a theme that is not related to that subject. But again, if a person has mentally prepared themselves for such kind of uncertainty, that really helps. And sir, doing this practice of writing PYQs also gives you the confidence that you have thoroughly covered the entire syllabus. PYQ based notes is also something that I highly recommend to people, where Okay. they are able to make templates and further points for them to write in such questions that are too specific or too factual. Because so there's a general rule. If a question is too difficult, its answer would be more general. And if a question is too general, the answer needs to be more specific. So, sir, Hmm. such you can say, sir, hidden patterns lie in UPSC means questions. And if a person has again familiarized themselves with them, just like for prelims questions, I think so they will be good to go. ओके ओके अर्पित, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बिकॉज स्टूडेंट्स आर जस्ट व्हाट्सएप कर रहे थे, अरे इस पे This कमेंट better. कर, या आई थिंक बोलते बोलते थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही थी। Yes, sir. Sir, I hope it's just better now. अभी ठीक है, हाँ मस्त है, अभी कोई दिक्कत नहीं। Right, sir. Right. ग्रेट। नाउ अदर देन प्री एंड मेंस प्रिपरेशन, मैं बहुत ज्यादा बात करना चाहूंगा अभी प्री ओरिएंटेड, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक Yes, प्री sir. इज नेक्स्ट नेक्स्ट It's a डोर, high time now. इट्स ए हाई टाइम नाउ। अब मुझे ये बताइए कि अदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द स्ट्रेटजी एंड ऑल, what is the role of the right mindset? Because I have seen a lot of serious aspirant, they lower their guard, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, और अच्छा स्टूडेंट भी just because of pressure नहीं कर पाता है। What should be the right mindset? अर्पित, मुझे आप ये बताइए, इसके ऊपर बताइए। So I think attaining the right mindset could only be through following the process, which is हम्म very boring, it is very cumbersome, and getting the हम्म basics right. There is not anything exceptional a person has to do in order to clear prelims. It's all हम्म about doing the basics right, revising your notes as हम्म many times as possible, reading the हम्म NCRTs thoroughly, not neglecting the role of PYQs, and हम्म sir, practicing enough mock test. And so हम्म apart from that, I think जो पूरा तैयारी हम करते हैं वो एक तरफ होता है और हम्म एग्जाम वाला दिन एक तरफ होता है. On the हम्म day of the exam, be confident because a lot of time it's your confidence that's going to matter. From last year, हम्म if I give an example, there was a question on Gandhi Peace Prize, and it was asked, okay, who are the members of the committee who decides who will be the recipient of the prize. So there were options: President, CGI, Prime Minister, and Leader of Opposition, I guess. So, sir, here a person has to think and use the general awareness that they have gathered over the years. It's not हम्म something too specific that is mentioned in our standard books where we read. But, sir, a general awareness of an aspirant gather while they're preparing for UPSC. That हम्म president is not a part of any committee usually. Rather, they are the person who confer the award. And this हम्म is a very basic understanding, very basic logic a person has to apply. So this is one example. In this way, if a person is calm and composed, they can apply such logics and their general awareness to solve many questions right. राइट, 100%। when we talk about I think आपने अपने कॉन्वर्सेशन में मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन की बात की हुई है, So, सो कैन यू टेल दीज एस्पिरेंट्स कि the the power of visualization, and the difference between dreaming and visualization, because I hear a lot of students, they dream, they don't visualize, yes, because you have done it and you have achieved. Okay, and this is a very कॉमन क्वेश्चन जो कि मैं पूछता हूं हर एक रैंकर से, और ये एक मैं कॉमन पाता हूं हर एक रैंकर में जो कि विजुअलाइज करते हैं। तो मुझे वो बताइए, वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि हम कैसे विजुअलाइज करें, कैसे मैनिफेस्ट करें, सो दैट जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे मिल जाए। yes, sir. I'll give a distinct answer here. What I हम्म believe
what worked for me was not positive motivation, but negative reinforcement. What kind of life I don't want to live, ठीक what है kind of person I don't want to become like. ठीक है I was too afraid of mediocrity. I was too afraid of being labeled as average. So that ठीक in a है way helped me to keep working, keep going, हम्म, keep हम्म, striving ahead to हम्म, some make sure that I am pursuing a greater good and a good not only for myself, but where I हम्म, can get a platform, an avenue where I can be of much significance to other people, where my life could be utilized not only for personal fulfillment, but हम्म, to leave an impact, to leave a हम्म, legacy. So हम्म, these were the kind of self talks I used to do with myself, with the kind of person I want to become like, and more हम्म, importantly, the kind of person I don't want to become like. हम्म, Because I feel like as much as people say competition is getting really tough, it's becoming really hard to get through difficult competitive exams. I हम्म, think the opposite is true. The opposite is also true. Competition is getting tough, but people are also very distracted. And हम्म, among such a distracted crowd, if you can be a हम्म, person who's disciplined, who's sincere, who's doing the basics right, who हम्म, has a clarity of mind why they are here, why they are doing this, not because of external validation, not because of any such external reinforcement, but for हम्म, personal fulfillment, for the desire to have meaning in their life, to have a purpose in their life, where the work they do, they also reflect their personal values. So I हम्म, think these kind of thoughts that kept me going, that kept me ठीक है motivated. Sir, a person should think for themselves because once you signed up to prepare for this exam, there is no going back. You cannot complain. You cannot be complacent because हम्म, there are thousand other people who are also working equally hard हम्म, हम्म, to be at the same place where you want to be. So it's all हम्म, about doing that hard work. Plus, so destiny also has a role to play in it. If you are right a person who's been sincere, who's been honest, who's been genuine, who's been hardworking, so then fortune will also favor the brave, I believe. लक लक पर बिलीव करते हो आप अर्पित कि आपको लगता है कि नहीं लक मैटर करता है एग्जाम में So definitely, sir. Sir, especially in this exam, हम्म, even a single mark can make a lot of difference. And हम्म, not every stage of this exam is flawless. There could be arbitrariness or subjectiveness हम्म, here or there, especially in the interview stage. So हम्म, there, if a person is making it, that means that they are a deserving person. But if a person missed by a few marks, that in no way means that the person was not deserving enough. The हम्म, person who was not in the final list, they also worked hard. The person who was not able to clear the mains, they also worked hard. Even the people who were not able to pass prelims. So I हम्म, don't think there was any as a deficit in their preparation. But हम्म, for some or the other reason, people miss by a margin of few. few marks right Few marks, right? Yes, luck has to be there. But हम्म, sir, one cannot solely rely on luck. One has to हम्म, make their own practice, their own hard work to be the हम्म, priority. And so हम्म, do not make a compromise here when it comes to perform. right I have got like 1 2 questions उसके बाद I will ask students to ask you मेरा second last question आपसे ये है Yes, you've been born and brought up in very good family you've been given good education आप DU में थे हिंदू कॉलेज यू सेड राइट हिंदू कॉलेज में आप थे yes, और आपने अभी कहा कि आई आई डोंट वांटेड टू गेट एन एवरेज लाइफ मुझे ऑर्डिनरी नहीं पसंद है और यू वांटेड टू सी योरसेल्फ बिकॉज यू एक्सपेक्ट आपकी कैपेसिटी थी आपकी आपकी स्ट्रेंथ है वो यू वांटेड टू सी योरसेल्फ ऑन टॉप कभी ऐसा नहीं हुआ अर्पित की इस एग्जामिनेशन में आपको डर लगा कि यार फेल हो गए तो प्री में मेंस में इंटरव्यू में ये डर नहीं लगता था yes, sir. So definitely, sir, that fear is there in the mind of every aspirant. So for me, हम्म sir, I've been very privileged enough, and I realize the fortune that I've blessed with, where I could take my time, where my हम्म parents allowed me to pursue my dream, and give time uh, to this preparation as much as it deserves. Sir, हम्म I was fortunate enough to have no such obligations or such constraint. हम्म I was provided with the resources and, sir, all the facilities that are in there. And हम्म sir, I didn't feel like on that front I ever felt like that I'm missing out on something. So apart from that, I made sure that the trust my parents and every person associated with me has instilled हम्म in me. I performed on those expectations, and on my part, there are no complaints. And even if I don't clear this exam,
at least I should have no regrets that I was not able to give my 100%. And so I think that's the least that we can do. That's the most that we can do. There is no guarantee for success, especially in this exam. But sir, having no regrets and sir, giving away everything, so I believed on that. And sir, God has been kind enough to give this privilege of a life to me. And sir, blessings and sir, of parents. अर्पित, since आपका पहले बार में एग्जाम ये क्रैक हुआ है, now do you think कि एक कैंडिडेट के पास बैकअप प्लान होना चाहिए while preparing for UPSC? Yes, sir. Sir, I think the situation depends on the respective capacity of a candidate. If a person can afford to give 2-3 years, which is the least which is the most that this exam will take from you, even if you clear in your first attempt, at least 2 years of preparation is prescribed. Right. I feel like if you're clearing at least prelims, then a person should give themselves time to prepare wholeheartedly for this exam. But if the case is that 4 attempts have already you've given and you're not able to clear the prelims, so that becomes a call for you to actively look for an alternative. Not because you want to abandon your dream to pursue UPSC, but at least have a safe harbor with yourself. Because sir, if you have an alternative with you, you will be stress-free and you will be better able to prepare for this exam. Exactly. Right. Yes, sir. Right. One last question. So guys, जब तक मैं ये लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अर्पित से, मीनवाइल आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके क्या डाउट हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो, पर्सनल क्वेश्चन हो, यू वांटेड टू आस्क, मैं पूछ सकता हूँ। मीनवाइल आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, अर्पित को 7:30 7:40 के अराउंड निकलना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। ओके, प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, मैं 4-5 क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। ओके, सो अर्पित, आई हैव लास्ट क्वेश्चन कि बिफोर आई विल ओपन द प्लेटफॉर्म। तो ये स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं। नाउ इफ समबडी वांट्स टू क्रैक यूपीएससी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट या इन दिस अटेम्प्ट, तो कौन से रेड फ्लैग्स हैं? मुझे 4-5 रेड फ्लैग्स आप फटाफट बता दीजिए जो कि आपको बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो नहीं करने एग्जामिनेशन में। Yes, sir. Sir, so I also lived in Karol Bagh for some time. And sir, there I had my experiences of what quality should not be there. Right. What kind of people or traits you should run away from when a person is preparing. First is, sir, running after every resource that is out there in the market, purchasing every course, sir, watching every topper talk, sir, following every topper on Instagram here and there, but not really focusing on the substantial part of this exam, which is understanding the syllabus, making yourself familiar with the PYQs. Sir, there's a lot of distraction, and a person who runs after all this, so they are the people who suffer at the end. Secondly, sir, don't have people who have a negative mindset. People who talk about what if and नहीं हुआ तो, और क्या कहते हैं, इतना कुछ है, नहीं भी हो सकता है, इतना कंपटीशन है. Surround yourself who motivate you, who tell you कि कैसे नहीं होगा, आपका नहीं होगा तो किसका होगा. Like these talks may sound like superficial, but when you again hear positive things about you, you reinforce that, and you end up internalizing all these traits. Your expectations of yourself also raise that you have to perform, you have to work hard because you have made promises. There are people who are looking forward to you. Right. And sir, third is, I guess, a person who has basically wrong motivations why they want to pursue civil services. Maybe sir, running after fame or all the glamour that this exam and these services are surrounded with. Or sir, having very trivial reasons why they got into civil services preparation. Parents pushed them into the preparation. Have people who are internally motivated and they have their reasons clear. They have made certain sacrifices, and their reason is not only personal but something more than that. People who really want to get into these positions of significance where they can make an impact, where they can actually work for the people, and the people who are integrated, who are genuine. Sir, I think these are the qualities that aspirants should keep in mind, not just while they're preparing,
but also while they are managing their social relations and social equations. राइट, ग्रेट। नाउ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और निधि वांट्स टू आस्क समथिंग। निधि, आप क्या पूछना चाहते हो अर्पित से? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने कैसे डिसाइड किया कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ना चाहिए और मेंस के लिए नोट्स बनाना चाहिए और ये मुझे छोड़ देना चाहिए? हाँ, तो पीवाईक्यूज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एग्जैक्टली पीवाईक्यूज का रोल यहीं पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक को आप उतनी डेप्थ में कवर करो। तो प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स हो गया, कोरल्स हो गए, या फिर पार्लियामेंट हो गया। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको पता चलता है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ना सिर्फ जो कि किताब में ऑलरेडी दे रखा है, बल्कि खुद आपको रिसर्च करना ज़रूरी है इनके बारे में। आप गूगल पर जाओ, टॉपिक का नाम डालो, यूपीएससी आगे लिखो, और आपके सामने काफ़ी ब्लॉग्स आ जाएंगे, आप उनको पढ़ो, उनसे इंफॉर्मेशन कुछ कुछ पिक करो। आजकल एआई टूल्स काफ़ी ज़्यादा काम के हो गए हैं, तो उनसे आप रिसर्च कर सकते हो टॉपिक्स के बारे में। और तो फिर जब आप करोगे तो आपको आइडिया खुद लग जाएगा कि क्या चीज़ें आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़नी है। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होगा, आपको फिर भी बाकी टॉपिक्स भी पढ़ने हैं जो कि शायद पहले नहीं पूछे हैं, फिर एक आध बार ही आए हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आप दे सकते, आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज उसको ब्रॉड रखना है। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जो कि मतलब टॉपिक्स काफ़ी रिपीटेडली आ रहे हैं उनमें आप जा सकते हो, लेकिन बाकी टॉपिक्स के लिए आपको थोड़ा शैडो अप्रोच रखना है, जहाँ पर अगर सिर्फ नज़र के सामने से भी गुजर गया तो काफ़ी है। और एग्जाम हॉल में अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर वो काफ़ी होगा आपको सही आंसर मार्क करने में। आपने राइट। मेंस के लिए कैसे डिसाइड किया था पीवाईक्यूज को सॉरी, एनालिसिस करके? मेंस के लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, तो मेंस के लिए भी सेम चीज़ है। मेंस के लिए मैंने क्या किया था, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था पीवाईक्यूज को ग्रुप में जिनकी कॉमन थीम है, और फिर मैंने उनके ऐसे पॉइंट्स बना लिए थे जो कि अगर एक क्वेश्चन आता है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो वो फिट हो जाए, ताकि मेरे जो नोट्स थे बहुत ज़्यादा बल्की नहीं थे, वो बहुत लिमिटेड थे, और मैं सेम पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से मोल्ड कर कर अलग अलग जगह पर लिख पा रहा था। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये कॉमन थीम्स हैं, इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, और काफ़ी इनमें लिंकेजेस हैं। तो मैंने देख लिया क्या क्या पॉइंट्स इनमें क्या कहते हैं सिमिलर से हैं जो कि लिखे जा सकते हैं, और मैंने काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा इंट्रो और कंक्लूजन के लिए। मीन्स के दौरान आपको बिल्कुल भी फिक्स्ड और रिजिड नहीं रहना है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, इतने फ्लेक्सिबल रहिए कि आप उसको अलग अलग तरह से मोल्ड करके उसका इंट्रो या कंक्लूजन बना सके। और मेंस के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पार्ट्स आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन के। आपको नंबर इसके नहीं मिलेंगे कि आपको कितना ज़्यादा पता है, आपको नंबर इसके मिलेंगे जो क्वेश्चन पूछा है उसको आपने कायदे से आंसर किया है कि नहीं। तो फिर बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। मेंस के खुद के एक नोट्स बनाइए, और पीवाईक्यूज को समझिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए। ये प्रेडिक्ट करना सीखिए कि पहले क्या पूछा जा चुका है, आगे क्या पूछा जा सकता है। अगर ग्लोबलाइजेशन और वुमन के ऊपर क्वेश्चन आया है पहले, तो फिर काफ़ी संभव है कि आगे ग्लोबलाइजेशन और कास्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, या ग्लोबलाइजेशन और क्लास के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और ये जब आप पीवाईक्यूज करोगे तभी आपको क्या कहते हैं आइडिया बेहतर लग पाएगा। पीवाईक्यूज को प्लीज निग्लेक्ट मत करिएगा। इट्स द सिंगल मोस्ट रिसोर्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन, एंड डू दिस एक्सटेंसिवली एज मच एज यू कैन। ओके सर, राइट, थैंक राइट। रिया, आपने हैंड रेज किया था, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो। रिया। सर, आपकी प्रीलिम्स को लेके मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी, प्रीलिम्स को एलिमिनेशन लेकर, टेक्निक वगैरह वो सब? हाँ जी, एलिमिनेशन टेक्निक इट्स वेरी हैंडी, इट्स वेरी यूजफुल, लेकिन ये आप समझिए कि आपको ब्लाइंडली एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई नहीं करना है। काफ़ी क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकता है, लेकिन आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्राइमरीली आपको अपनी नॉलेज पर रिलाई करना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज इनसफिशिएंट है, तभी आपको एलिमिनेशन टेक्निक पे जाना है। ये इंटेलिजेंट गेस करने का तरीका है। एलिमिनेशन भी आप सिंपली किसी ने बोल दिया कि ये स्टेटमेंट गलत ही होती हैं या सही होती हैं, उस पर मत जाइए। आप देखिए कि एब्सोल्युटली। जो जिस तरह से चीज़ें फ्रेम करी गई हैं, और उनमें क्या कहते हैं कुछ ट्रैप्स भी होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई हम्म, करना भी ज़रूरी है। तो हम्म, प्रीलिम्स का
एलिमिनेशन टेक्निक ये है। बाकी ऐसे बहुत सारी टेक्निक है जो कि प्रीलिम मैंने समझी है। मेरे पास एक कंपाइलेशन है, मैं उसको शेयर करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बाकी जो फंडामेंटल पिलर्स के बारे में हमने बात करी, आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए। मॉक्स, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटीज, आपने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया है तो फिर दिक्कत नहीं होगी आप। राइट राइट। वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिव्या। दिव्या ने काफी देर से हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं दिव्या, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। यस, प्लीज प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग दिव्या, आप पूछिए, सवाल आप पूछ सकते हैं। आप माइक अनम्यूट कर लो दिव्या, अगर आप पूछना चाहते Hello. Yes, sir. हैं। Now it is audible now. इट इज Congratulations, sir, for your थैंक यू, remarkable थैंक यू। achievement. Sir, I just want to ask that how you consolidated the information of the mocks you given before giving to the main examination, like prelims examination. Do you make a हाँ notes of it, or like you consolidated all the information in your mind and at the end you are given the examination? Like what is like हाँ जी, making a notes for normal and making the notes for the uh, mocks, how it is different and what strategy you have used for that? हाँ जी, एग्जैक्टली दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स। एंड हाउ आई डिड दैट, see, we tend to solve a lot of mock test. Many people solve 20 30 mock test, but problem arises when they don't analyze the mock test they have already solved. There is no point of solving any number of mocks until unless you analyze each and every question you're going through the solution. So what I did, मॉक टेस्ट का आपने कर दिया, ठीक है, फिर आपका जो सोल्यूशन वाला पीडीएफ होता है आप उसको पिकअप करिए। और ना सिर्फ जो कि क्वेश्चन आपका ठीक हुआ है, क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके ठीक भी हुए हैं आप उनका भी सोल्यूशन पढ़िए अच्छे से। आप हर एक पॉइंट, हर एक ऑप्शन को थॉरली एनालाइज करिए कि क्यों कोई चीज़ सही थी, कोई चीज़ गलत थी। काफ़ी बार क्या होता है, हमने टॉपिक पढ़ लिया होता है, हमको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, बट देर आर गैप्स इन आवर नॉलेज, एंड mock test exposes those gaps. So once you identify that there's certain deficit in your knowledge, और जो notes आपके हैं कुछ वो आपके एस्पेक्ट्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं for some topics that have been asked in mock, आप उसका नोट ले लो, and after you have taken note of those gaps, those missing information, just keep the entire solution and mock test aside. उसको बार बार फिर रेफर करने की जरूरत नहीं है, and you have that document where you have consolidated information from various mocks. Revise only this one document, and as many times as you can revise it, the better it be for you to gain confidence. डिजिटल में आप कर सकते हो अगर आप पेन पेपर से मोर कंफर्टेबल हो, पर ये प्रैक्टिस मेरे लिए तो काफ़ी हेल्प करी थी, काफ़ी टॉपर्स को हेल्प करती है। सो फॉर योर ओन बिहाफ यू पर्सनलाइज इट, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू ऑल्सो। Great, great. Thank you, Arpit. Thank you, sir. We will take 2 to 3 more questions. मोहिनी, आप हैंड रेज किए हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोहिनी। सर मेरा सवाल सीसैट को लेके है। मैं लास्ट ईयर भी सीसैट फेल कर गई हूँ, तो सर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज क्या होनी चाहिए, टॉपिक्स वगैरह, सर उसके लिए कुछ बता दीजिए। हाँ जी, आप देखो सीसैट के लिए आप सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करो हर एक टॉपिक के, और जो जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनर वीडियोस ऑन यूट्यूब। यू डोंट हैव Right. टू परचेज एज सच एनी कोर्स फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। देयर इज सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल फॉर यू टू क्लैरिफाई योर सीसैट कॉन्सेप्ट्स। तो जो जो कॉन्सेप्ट्स में आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसका वीडियो देख लो, 1-2 घंटे के होते हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम। और एक बार आपने पीवाईक्यूज कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आप बाकी मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब जितना ज़्यादा क्या कहते हैं प्रैक्टिस करोगे, जिससे जैसे आप कॉन्फिडेंट बनोगे, आपको हेल्प करेगा। और आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। अगर आपको लगता है कि किसी एक सेक्शन में क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उससे कम क्वेश्चन करिए, बट मेक श्योर कि अदर सेक्शन से आपका एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट हो रहा है। सो फॉर पीपल लाइक मी इट वाज मैथ्स ऑब्वियसली, सो आई रिलाइड लेस ऑन मैथ्स। मैथ्स पे आप क्या कहते हैं पीएचडी किए बिना भी सीसेट किया जा सकता है। इट मे साउंड सरप्राइजिंग टू सम पीपल, बट इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। तो cherry pick the easy questions,
आसान आसान क्वेश्चंस ढूंढ के करिए और एक अच्छा अटेम्प्ट करिए सी सैट का। 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने होते। आप अगर पकड़ के 50 से 60 क्वेश्चन भी ठीक ठीक कर लेते हैं, उसमें आकर आपके 40 से 45 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं, यू हम्म आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू क्लियर सी सैट। हम्म ओके राइट। सर, मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैथ नहीं है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो रही है। हाँ जी, तो मैथ्स के लिए आप एक्सप्लेनर वीडियोस देख लीजिए। यूट्यूब पर रिकमेंड मैं कर सकता हूँ, जैसे ऋषभ सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट हम्म काफ़ी अच्छी है, उन्होंने काफ़ी हम्म अच्छे से समझाया है। उसके अलावा मंजुल तिवारी सर हैं, मैंने उनकी क्लासेस करी थी, मुझे दिक्कत हुई थी जिन जिन टॉपिक्स में, तो आप इनकी देख सकते हैं और फिर आपको मोर और लेस दिक्कत नहीं होगी। यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू सॉल्व क्वेश्चंस देन। ओके, थैंक यू ग्रेट, सर। थैंक यू। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है अर्पित, फॉर एग्जांपल अभिषेक एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने कमेंट किया है कि रिवीजन या टेस्ट सीरीज दोनों में से हम क्या प्रायोरिटी करें अभी। सो फॉर मेंस और प्रीलिम्स, प्री प्री सर डेफिनेटली सर, सर दिस इज इक्वली ट्रू फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो, रिवीजन पे ज़्यादा हम्म ध्यान हम्म देना चाहिए। हम्म क्योंकि आप क्या कहते हैं, हो सकता है ज़्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करो, उसमें आपके लगातार अगर हो सकता है अच्छे नंबर ना आए, तो फिर आपको हम्म स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी। एंड नॉट हम्म एवरी टाइम जो मॉक टेस्ट होता है दैट अलाइंस विद द पैटर्न ऑफ यूपीएससी। So राइट even if you're not doing good in mocks, that in no way reflects the level of your preparation. तो मेक श्योर जो कि आपने लिमिटेड कंटेंट अभी तक कंसोलिडेट किया है, जो पढ़ा है, कम से कम हम्म वो आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। आई थिंक हम्म दिस इज मैक्सिमम दैट वी कैन डू एज एस्पिरेंट्स। बाकी अगर हम्म क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, देन कट ऑफ विल बी इम्पैक्टेड डायरेक्टली। तो राइट फोकस ऑन रिविजन, रिविजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट, ग्रेट। वन लास्ट क्वेश्चन, दे स्टूडेंट, उनका नाम है तरुण महांता, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि व्हाट वाज योर डू नॉट अटेम्प्ट रूल इन प्रीलिम्स, लाइक व्हिच क्वेश्चन डिड यू स्ट्रिक्टली स्किप इवन इफ यू हैड पार्शियल नॉलेज। सर फॉर मी इट वाज लाइक, so I divided question in different brackets. ओके। Questions that I was sure of, वो तो मैंने करे हैं। हम्म 50-50 questions also where I felt like that there's a 50% chance that I'll get it right. So, ठीक है। sir, 60% of the time I also attempted them. But हम्म there are questions like जहाँ पर आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो चार में से, हम्म और तीन ऑप्शन बचे हुए हैं, तो हम्म सर आई अवॉइडेड अटेम्प्टिंग देम, क्योंकि सर वो सिंपली गैम्बल करना हो जाएगा। And हम्म in that case, it's all guesswork. And if you are relying on guess to clear prelims, so that in its own way reflects your insecurity about your preparation. So, sir, हम्म questions where you have no idea, where आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, सर ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए। ठीक है। टू मोर क्वेश्चन क्विकली, एक श्रमन बैनर्जी का है और एक मनीष ने हैंड हैंड रेज किया है, दैट्स इट, वी विल टेक इट लास्ट। श्रमन का यस। पूछना ये है अर्पित कि मेंस के आंसर राइटिंग जब हम करते हैं, सो शैल वी राइट मोर विद द माइंड मैप फॉर्म या फिर हम बुलेट पॉइंट्स में लिखें। So, sir, increasingly people are becoming very innovative how they present their answers in आंसर। means. हम्म My advice would be, as much as possible, write in points format, bullet points हम्म format, हम्म and mind map and this half sphere diagram. They हम्म become more handy when you have to write in less time, when you have हम्म to make sufficient coverage of the entire page, and when also the content is, say, deficient. So हम्म in such questions that are more difficult in nature, I would recommend people to write in these creative forms. Otherwise, हम्म questions that are more general in nature, that are more direct, I think bullet format works better there, because there you can हम्म write more. And if you have quality points, if you can add more value additions, that will definitely हम्म get you more marks. But again, a flexible approach is needed. And I would recommend against writing the entire format in one simple manner. The more innovative and creative a person can be, I think this authenticity would be rewarded in the exam. 100%। वन लास्ट क्वेश्चन, मनीष आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप फटाफट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes, sir. Congratulations, Bhaiya, for achieving your goal. Thank you so much. I have two questions. हम्म
First is how can you deal with men's answer writing, the question which you don't know? Okay. So for questions that you're like not sure of, you cannot say that मुझे question नहीं आता इसलिए मैंने attempt नहीं किया. You anyway you have to attempt, because even if you get half a mark or 1 mark, that's still Right. enough to make a difference in the final list. For such questions, what I will say, use your peripheral knowledge. Think about the keyword that are mentioned in the question through different ways, and मुझे लगता है कि it will be possible for a person to recall at least something. हम इतना पढ़ते हैं, through various dimensions we cover different topics. कुछ ना कुछ मिल जाएगा. तो at least write something. Write something in the prescribed format of intro, body, conclusion. If you are not able to write 10 to 8 to 10 points for a 10 marker, at least write 3 to 4 points. But make sure that you write something and you don't leave the page empty. Use your peripheral knowledge and जितना आप क्या कहते हैं जोड़ सकते हो. आपको हो सकता है कोई और क्वेश्चन हो, उसमें कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली हो, use that in that question, but don't leave it. Leaving a question in mains is a sin, and it's not something that is usually prescribed. And one silly question. In some question, I know the body and conclusion, but I don't know how to write the introduction in such question, and in how many paragraph or lines I have wrote. See, there is no as a general rule के introduction इतनी lines का ही होना चाहिए. I would say कि 3 से 4 lines का is a decent introduction, but you feel like कि आप कुछ उसमें extra add कर सकते हो by extending it to 5 to 6 lines, then it's okay. There's no problem with that. And how to write introduction? There are certain methods of framing introduction. It could be by referring to some current development, that could be brought in your introduction itself. That's why you're also, in a way, showcasing your awareness about the topic, and you're actually telling the examiner that I know why you have asked this question. So एक ये तरीका है. दूसरा होता है definition based. अगर कुछ keyword mention है, simply define it. Give a very normal definition. That also acts as a decent introduction. And a futuristic introduction could also be one other way. It's very simple. Maybe some challenge or concern is being discussed in the question. So maybe you can, begin your introduction in the format that there are concerns, but the topic is more critical and complicated in nature. Let us explore it. So you can also write in this way. And remember, mains में जो भी आंसर आप लिखोगे, they will not perfect. I think at least 50 to 60% आंसर जो होंगे आपके, वो काफी एवरेज क्वालिटी के होंगे. कुछ क्वेश्चन में आप एक्सेप्शनली परफॉर्म करोगे क्योंकि वहां पर आपको डोमेन नॉलेज ज्यादा होगी. कुछ क्वेश्चंस काफी खराब भी जाएंगे क्योंकि वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही हैं. वहां पे आपको नेसेसरली आंसर नहीं पता होगा. उन क्वेश्चंस में आपको 1 से 2 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे. बट रियलाइज के ऐसा सभी के साथ होगा और आप अकेले नहीं हो. तो आप ये बेसिक कर पा रहे हो तो भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो मेंस क्लियर कर पाने के और एक अच्छा रैंक सिक्योर कर पाने के. Right. My last question, Bhaiya. Last question. My first attempt is in 2027. So at this moment, I mainly focus on men's preparation. So my optional is also PSIR. So I need your GS answer copies, always your optional copies, and men's mark sheet also. So would you like to give? हाँ जी, definitely. I will share my email with sir, so you can contact me on that. And क्योंकि आपको 27 में you have ample time with you. Focus on mains and perfecting your concepts. Films पे आप बाद में ध्यान दे सकते हो. अभी build your foundation. Make sure that your basics are strong. And if you मतलब क्या है कि भैया इसमें कि जो PSI है वो मैंने पहले 2024 से प्रिपरेशन शुरू किया हूँ. तो उसी टाइम मैंने ऑप्शनल को पूरा खत्म कर चुका हूँ और जो करंट रिलेटेड वो पढ़ता हूँ. तो उसमें मैं बहुत जगह खोजा तो मेरा ऐसा कोई आंसर राइटिंग मिला नहीं. इसलिए आपका भी वही ऑप्शनल है, इसलिए चाहता हूँ को आंसर कॉपी थोड़ा मिल जाता कि आइडिया हो जाए. हाँ जी, तो आंसर राइटिंग आपको शुरू करनी है. फॉर दैट आई विल रिकमेंड यू लुक एट द टॉपर कॉपीज. कुछ टॉपर्स जिनको मैंने फॉलो करा था फॉर PSIR लास्ट ईयर, दमनप्रीत अरोड़ा मैडम है. उनके हाईएस्ट है PSIR में 299.
उनको उनकी कॉपीज आप देखो, आपको वो बेंचमार्क पता चलेगा कि किस क्वालिटी के आंसर्स आपको लिखने हैं एक्चुअली। तो आप जब देखोगे तो आप खुद भी कहते हैं वैसे कोशिश करोगे, इवेंचुअली यू विल रीच दैट लेवल ऑफ आंसर्स, दैट क्वालिटी ऑफ आंसर्स। तो ये कुछ टॉपर्स हैं। बाकी आपने अगर नोट्स बना लिए तो दैट्स वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आंसर राइटिंग एंड बिकमिंग गुड एट कंप्लीटिंग पेपर। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, इतना आप कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। यू नीड टू वरी अबाउट इट। डोंट माइंड भैया, मतलब मैं हाँ जी। चाहता हूँ कि एक जो टॉपर है उसका आंसर राइटिंग कॉपीज, और एक जो थोड़ा मतलब कुछ लोअर रैंक है उस दोनों का मैं आंसर राइटिंग को एवेलुएट करके मैं चाहता हूँ कि अपना थोड़ा आंसर हाँ राइटिंग इम्प्रूव करूँ, इसलिए आपका हाँ आंसर तो राइटिंग कॉपी मांगा। हाँ जी, तो माय कॉपीज आर आल्सो, सो आई refer to Shubhra Ranjan for their PSI test series. So I think on their sites they are available. You can access their sites, and also for other topics also, you can get a better idea of like what's the differential factor in PSI here. All right. Well, great. Thank you so much, Arpit. Back to back ये क्वेश्चंस आपके रैपिड फायर हो गए इस बार, तो फटाफट फटाफट क्वेश्चंस। एंड वी आर लिटरली ग्रेटफुल कि इतने बिजी शेड्यूल में वक्त निकाला आपने। और आई थिंक ईच एंड एवरी आंसर इज कमिंग फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड द एक्सपीरियंसेस विच यू हैव गॉन थ्रू। वो बहुत ही ज्यादा रॉ एंड रियल है। एंड आई एम श्योर इनको समझ में भी आया होगा स्टूडेंट्स को। कल इट्स द सेम जर्नी, कल आप वहां थे, आज आप यहाँ हैं, आज ये लोग यहाँ हैं, कल ये लोग आपकी जगह होंगे। बट मेक श्योर कि हम लोग, जैसे अभी आई वॉज बैक ऑफ द कैमरा में अर्पित से यही डिस्कस कर रहा था yesterday या डे बिफोर yesterday आई स्पोक टू युक्ति, शी ऑल्सो क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उनका भी यही कहना था कि गाइडेंस एंड मेंटोरशिप इज रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम फॉलो तो करो, कि Yes, sir. Yes, sir. फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। वन लास्ट क्वेश्चन अर्पित, दैट हाउ इम्पोर्टेंट द रोल ऑफ गाइडेंस एंड मेंटोरशिप इन दिस प्रिपरेशन? Sir, I think it's the more decisive factor, like what determines whether a person will succeed, ever succeed or not, or whether a person will succeed early or it will take them some time. So having a Right. right mentor, having right guidance at the most appropriate time is most important thing, because सब मेहनत सब लोग करते हैं, हर कोई तैयार है, everybody is willing to do the hard work, but a lot of time people end up wasting their time on something which is not worth it, which is not necessarily helping them Right. towards clearing this exam. So a person who comes from such an experience, a person who has been who's seen all this, who also did the wrong things, they understood that what are the things a person should avoid while they're entering the preparation. I think so there in that field you are doing a great work through your mentorship and guidance courses. Sir, the work you are doing on YouTube, free for students, uh, getting them a lot of insights about this exam. So through your own experience, you are teaching them. Not everybody is doing that. So sir, kudos to you for that. And so definitely, it's very important to look for a right mentor. And Exactly. once you get them, stick to their advices and follow them by their heart, because they can only bring you to the threshold. Beyond that, a person has to walk by themselves. Exactly. No, first of all, thank you so much for appreciating us and our work at here, Margdarshan IS. The fundamental and objective of this institute and myself is to debunking the myth and then decoding the exam. I think जब हम decode करके सबके सामने एकदम clearly रख देंगे ना, raw and real, तो सबको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या कितना टफ है, किसको क्या पढ़ना है। और आज से थोड़े टाइम पहले ये थोड़ा सा करना टफ था, बिकॉज सोशल मीडिया भी नहीं था और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट नाउ डेज, नॉट ओनली मी, देयर आर मेनी गुड मेंटर्स एंड टीचर्स। अब वो, बिकॉज पढ़ना तो है ही, हर एग्जाम में पढ़ना है आपको, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो हमको मतलब सर्विस में भी है, हम जब अब सर्विस में चले जाएंगे तो भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन करना क्या है, क्या Right, पढ़ना है, sir. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको Right, हम sir. लोगों ने कोशिश किया है करने की। सो अगेन थैंक यू सो मच Yes. अर्पित। और स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैं एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। और अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी पॉलिसी मेकिंग की जिम्मेदारी आपके हाथ में भी है। तो हम एक देख सकते हैं एक सफल ब्यूरोक्रेट आपके अंदर। और सिंस यू आर गोइंग टू जॉइन द रेवेन्यू सर्विसेज, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी मेक आप करिए, ताकि यहां से कोई
कोई भी टैक्स इवेट करके ना जाए। Yes, sir, definitely. I'll give my 100%. In whatever department, whatever agency I'll work, I'll make sure that I'm able to perform with the best of my abilities. Thank you, sir. Awesome. Great. Thank you so much, Arpit, for your time, and wishing you very, very best for your career ahead. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you It, for having me. My pleasure to be here. Thank you, sir. it's, thank you so much. All the best. Thank you, guys. I shall see you soon. And thank you so much, Arpit, once again. Thank you. Thank you, sir. Jai Hind. Have a good day. Jai, Jai Hind, Jai. sir.